Hello students, we have already done the revision of chapter business environment. The second chapter we have started for the revision is your management. Here in this part we will discuss the meaning of management, what are the different concepts of management, and why management is being discussed in different concepts, and what are the features of the management we'll discuss here in this part. So let us start with the second chapter, our management. Management, the art of getting things done through others with formally organized group. What is this? It is the art of getting things done through others with formally organized groups, or it's a process consisting of planning, organizing, controlling, directing to accomplish the predetermined objectives by the use of the people and resources. यहाँ एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग है जो कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए की जाती है बाय यूजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज. नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट? So here we have got the definition. Management is the art of getting things done through others and with formally organized groups. Right? ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, क्योंकि फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स में ही हम मैनेजमेंट यूज करते हैं. इनफॉर्मल ग्रुप्स में मैनेजमेंट जो है आपका नहीं होता. इट इज व्हाट ग्रुप वेयर वी आर नॉट फॉलोइंग सर्टेन रूल रेगुलेशन और देयर इज नॉट नो फॉर्मल आपका हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट. देयर इज नो सेट कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट, हु हैज टू communicate to whom. So that's why it is called to be a formally organized group. So management's other definition is management is a process consisting of planning, organizing, directing, staffing and controlling, which is performed to determine and accomplish the predetermined objectives by the use of the people and resources. So we have done management's definitions. Now we are just going with the different concepts or different meanings of management. As I have told you, there are different concepts of management. So management can be defined as an activity, as a group, as a discipline and as a process. As an activity means activity क्या हुआ? काम करना. So काम करना, मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है? मैनेजमेंट काम ये कर रहा है कि वो लोगों से काम करा रहा है ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके. एज अ ग्रुप, ग्रुप मीन्स मैनेजमेंट एज अ ग्रुप मीन्स वो सब लोग जो मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, आपके डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर एटसेट्रा. एज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है? आपके कुछ रूल रेगुलेशंस और कुछ आपके सेट प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाली एक ब्रांच हो गई, जैसे हमारी साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, राइट, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है. दीज आर डिसिप्लिन. तो उनकी तरह ही एक हमारा मैनेजमेंट भी एक डिसिप्लिन है जिसके अपने रूल रेगुलेशंस, अपने प्रिंसिपल्स हैं जिसको एज अ सेपरेट ब्रांच हम जो है डील करते हैं. एज अ प्रोसेस, प्रोसेस क्या है आपकी? क्या आपकी प्रोसेस मीन्स होता है एक सेट ऑफ सीक्वेंस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या एक्शंस हम कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस है कि एक सीक्वेंस में और एक सेट ऑर्डर में ये डिफरेंट एक्टिविटीज करती है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट. सो दीज आर व्हाट एज अ प्रोसेस वी डिफाइन द मैनेजमेंट. चलिए देखते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी. Management as an activity involves getting things done through the effort of the other people. Thus, an activity management guides, directs, regulates, and integrates human efforts to achieve specified result. So, अब आपको specified results को achieve करने के लिए हम direct कर रहे हैं, control कर रहे हैं, guide कर रहे हैं, integrate करते हैं human activities को और उनसे काम कराते हैं ताकि objective achieve हो सकें. तो एज एन एक्टिविटी इसकी इम्प्लीकेशंस या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट इज इंटरपर्सनल एक्टिविटी, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी
इट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड इट इज अ डिसीजनल एक्टिविटी. डिसीजन किसने लेना है? मैनेजर्स ने. क्या है कि क्या क्या काम कराने हैं, राइट? किस तरह से लोगों को और रिसोर्सेज को यूज करना है. ग्रुप के लोगों से एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, तो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. इंटरपर्सनल लोगों से काम कराया जा रहा है. नाउ एज अ डिसिप्लिन management, as a discipline management means it is a specialized branch of knowledge which involves the study of principles and practices of administration. It refers to a systemized body of knowledge and a separate field of study. एक systemized body है knowledge की और एक अलग study का field है. Management as a discipline comprises several specialized functional areas such as financial management, production management, etc. Management is multidisciplinary है क्योंकि it has borrowed concepts from various disciplines like economics, sociology, psychology, anthropology, etc. Now, management as a group. As a group, management means all those persons, those who are involved in managing an organization. It is a collective noun. What it consists of? It consists of board of directors, chief executives, head of departments, branch managers, superintendents, supervisors, etc. However, in practice, the term management is generally, it indicates only the top management of organization, और several managers आपके हो सकते हैं. There are several types of managers like family manager जो family manage कर रहा है, professional managers जो companies को या organizations को manage कर रहे हैं, और civil servants और IAS officers जो government के आपके जो servants हैं, right? Management as a process. Process क्या किया है? जो activities कर रहे हैं सब managers. A process is defined as a systematic method of handling activities. Management as a process means various functions which managers perform in managing organization. तो management क्या है? वो as a process है, वो various functions जो कि managers perform करते हैं managing करने के लिए organization. These functions should be performed systematically in an orderly manner and in a proper sequence. तो ये functions जो हैं orderly manner में और proper sequence में होने चाहिए. राइट ऐसे प्लानिंग के बाद आपकी ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. राइट इट्स नॉट देयर फर्स्ट कंट्रोलिंग एंड देन ऑर्गेनाइजिंग, देन प्लानिंग, देन स्टाफिंग. सो दैट हैज अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस. एक ऑर्डरली मैनर में है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही काम होता है. दीज फंक्शंस आर परफॉर्म टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. सो यू नो चिल्ड्रन, सो व्हाट आर द फंक्शंस and what is the sequence of that? It is first planning, then organizing, then staffing, then directing, and then last step is the controlling. Now, as a process, the implications of management are, or the consequences of management are, management is an integrative process as it integrates various organization resources to achieve organizational objectives. It is a continuous process. It is a social process because it relates to the people. और मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल. व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल? क्योंकि ये हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो, राइट? एंड irrespective of the size, whether the size of organization is a small or the larger one. Now we have come to the features of management. What are the features of management? Management is a goal-oriented process. It is goal-oriented because it is a purposeful activity, right? It is not being done randomly. किसी पर्पस को अचीव करने के लिए हम मैनेज करते हैं चीज़ों को कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको सक्सेसफुली मैनेजमेंट अचीव कर सके. Management is a purposeful activity as it is initiated and carried out consistently to achieve a predetermined end or a goal. The success of management is measured by the fulfillment of desired goals. Then management is a social process. Why it is social? Because it involves people. Management involves getting things done with the and through
people. In order to achieve the desired results, managers have to direct, regulate and coordinate the efforts of the human beings. क्या करना है? उनके ह्यूमन बींग्स के एक्शंस को डायरेक्ट करना है, रेगुलेट करना है एंड कोऑर्डिनेट करना होता है. इट इज अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक क्योंकि इट वर्क्स इन एन एवर चेंजिंग एनवायरमेंट. ठीक है. सो एनवायरमेंट चेंज होता है तो मैनेजमेंट को भी अपने प्लान्स पॉलिसीज को उसी हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है ताकि बिजनेस सक्सेसफुल रहे. A business operates in an ever-changing environment and its success lies in its ability to adapt itself to the changes in the external environment. Managers have to make changes in their functions based on environmental changes. Now, next is management is a group activity. Management involves coordinating the efforts of a group of people to achieve common goals. Management को क्या करना है? ग्रुप एक्टिविटी है तो ग्रुप का है सभी लोगों के कामों को देखना होता है क्योंकि इट इज नॉट इन आइसोलेशन. अपने आप में एक सिंगल पर्सन से काम करना हो तो मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है. बहुत सारे लोगों से काम कराना है तो मैनेज करना पड़ता है और उनको मैनेज करने के लिए उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि एक से दूसरी एक्टिविटी अफेक्टेड ना हो. रादर एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर सके. It cannot be performed in isolation. Okay. For example, in a hospital, doctor, nurses and administrative staff work together under management to ensure patient care. तो क्या सब मिलके काम कर रहे हैं? डॉक्टर्स भी, नर्सेज भी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी, ताकि पेशेंट की ठीक से केयर हो सके. मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी डायमेंशनल्स. मल्टी डायमेंशनल्स क्यों है? क्योंकि ये अपने जो मैनेजमेंट ड्रॉज इट्स कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, right, like economic, sociology, psychology, anthropology to achieve the desired results. Management is both science as well as art. Management is an art because it requires personal skills, creativity and practice. It is a science because it is based on established principles, facts and techniques, right? For example, a manager uses sales data. Using data is a science and for forecasting the demand. And interpersonal skill, the interpersonal skill, that is an art to inspire the team. So management art है. आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस चाहिए. और ये साइंस है क्योंकि इसके कोई सेट और वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि बाकी साइंसेस के होते हैं और ये फैक्ट्स और टेक्निक्स पे बेस्ड होता है. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. मैनेजमेंट इज द पावर which cannot be seen. हम इसको देख नहीं सकते, इसकी प्रेजेंस ही हम फील कर सकते हैं. और वो कैसे एविडेंट है? its presence is evident by the results of its efforts like orderliness, higher output, good profitability etc. तो इसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं रिजल्ट्स के थ्रू कि अगर काम अच्छे से हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा है. Thus the feeling of management is result oriented. तो मैनेजमेंट को फील करना कैसे होगा? रिजल्ट से. So it is result oriented. It cannot be seen. For example, a well managed office is clean, punctual and productive, though you cannot see management itself. Management is a universal process. Universal है means हर जगह available है. What is the nature? What is the size? What are the levels? Okay. Irrespective of that, management is existing everywhere. Management is applicable in all type of organizations, चाहे वो business organizations हैं, government organizations हैं, your hospitals, religious organizations, clubs, right? And at all levels, it's the top, middle or lower level. Principle of management are not rigid laws, क्योंकि इसे हम modify कर सकते हैं as per the conditions, as per the situations. ठीक है. For example, multinational company like Apple and a small local trader need effective management to run efficiently. तो चाहे वो Apple हो, चाहे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक सिर्फ सिंगल ऑर्गेनाइजर है, सिंगल बिजनेसमैन है, राइट, उसके नीचे वर्क कर रहे हैं आपका, राइट. तो सोल ट्रेडर का बिजनेस हो, चाहे वो एप्पल जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको एक इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत है ताकि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली रन कर सके. मैनेजमेंट इज क्रिएटिव.
व्हाट इज क्रिएटिव? क्योंकि आपको सिचुएशंस के हिसाब से काम करना है, राइट? अगर मैनेजमेंट नहीं हो तो रिसोर्सेज रह जाएंगे, उससे हम आउटपुट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. मैनेजमेंट मेक्स थिंग्स हैपन विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन. Without management, resources remain resources and can never become output. For example, a manager introduces a new marketing campaign using AI tools to reach younger audiences more effectively. So, एक आपने इंट्रोड्यूस किया, मैनेजर ने नया मार्केटिंग कैंपेन किया AI टूल्स को लेकर ताकि यंगर ऑडियंस तक वो पहुंच सके. Now the next is management is an integrating force. It brings together, integrating यानी कि सब चीजों को इंटीग्रेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है. It brings together human, physical and financial resources and coordinating them as a unified force towards common goals. For example, in manufacturing, management ensures that machines, labor and raw materials are synchronized for production. तो ये क्या है? It brings together human, physical and financial resources. Human resources, physical resources, financial resources. Human फिजिकल रिसोर्सेज आपके मटेरियल, मशीन्स एंड फाइनेंशियल यानी कि मनी, राइट, और द लोन्स, वट एवर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर, उनको कोऑर्डिनेट करना एक यूनिफाइड फोर्स में ताकि कॉमन गोल अचीव किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इन मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट मशीन्स, लेबर एंड रॉ मटेरियल्स आर सिंक्रोनाइज्ड फॉर प्रोडक्शन. सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली. इट्स नॉट अ वन टाइम कि एक बार आपने किया और खत्म. आपको लगातार, जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट भी एग्जिस्ट करेगा. इट इज, वी कैन से इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट अ डे टू एवरीडे प्रोसेस, बट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक बार प्लानिंग करी, वो प्लान अचीव हुए तो नए प्लान बनाने पड़ेंगे, उस प्लान के हिसाब से फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डायरेक्ट एंड कंट्रोल करना है आपको, और हर बार हर एक स्टेप पर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है ताकि देखना है कि जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या वहां पे कहाँ डेविएशन है, और उस डेविएशन को चेक करना और उसको करेक्ट करना. सो इट इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इट डज नॉट स्टॉप after achieving one goal but sets new ones. For example, a retail store manager regularly reviews sales, adjusts inventory and update staff role to keep operations smooth. तो एक रिटेल स्टोर वाला मैनेजर क्या देख रहा है? हर रोज की सेल देख रहा है, रिव्यू कर रहा है कि रोज सेल कैसे हो रही है, राइट. अपनी इन्वेंट्री एडजस्ट करता है कि सेल अगर ज्यादा है तो ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, कम है तो कम इन्वेंट्री चाहिए, और अपने स्टाफ को अब जो है अपडेट करके रखता है कि उनके क्या क्या काम करने हैं. देन लास्ट इज मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. क्या है? आपका जो थ्रू पीपल तो कर रहे हैं, हम लोगों से काम कराना है, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना है, रेगुलेट करना है. सो उसके लिए क्या है? मैनेजर हैज टू डायरेक्ट करना है उनको, और उनको रेगुलेट करना होता है. सो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग थिंग डन विद एंड थ्रू पीपल. इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, a manager has to direct, regulate and coordinate the efforts of human beings. For example, in a school, the principal delegates duties to the vice principal, and vice principal further assigns tasks to the tasks to the teachers, and the teachers, they are just performing their activities for the betterment of the students. So to end up the first part here only, I would like you children to keep revising your parts, because I am sending you all these in very small slots, in small segments, so that every day you can revise a smaller portion and can retain it. Thank you. Last and not the least, like, share and subscribe. Okay, and wait for the next part of this chapter.